नो टॉकिंग. आपको बात करना है तो म्यूट करके बात करो. मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको. ओके. What we saw yesterday was properties of mixing for real solutions, and we had considered Lewis viscosity rule with correction for non-ideality using gamma I, which is Fi bar is equal to gamma I xi Fi. That's for non-ideal solutions. And we have seen that gamma I is equal to 1 for ideal solutions. So this equation reduces to Fi bar is equal to xi Fi or xi Fi0. And from here we know the definition of AI, activity is nothing but Fi bar by Fi0. Is now from this 36 equation 36 is equal to xi. So for ideal solutions, if you know the mole fraction, you know the activity. So we can substitute AI equal to xi in all the equations which we derived for non-ideal solutions, and we'll get equations for ideal solutions. Okay, so if you compare the equations for non-ideal solutions and ideal solutions, we have derived for Gibbs free energy delta G by RT is equal to summation of xi ln AI. Now to substitute AI equal to xi, what we'll get is delta G by RT is equal to summation of xi ln xi for ideal solution. So if you know the mole fraction, you can find out delta G for any ideal solution. Okay, for volume change, property change, volume change of mixing, we had equation called this equation P delta V by RT is equal to xi summation xi ln double ln AI by double ln P at constant temperature in X. And we know that for ideal solutions, delta V is equal to 0, or otherwise you can say that okay, ln double ln xi by double, if we substitute AI equal to xi, we get double ln xi by double P, and we know the concentration is not dependent on pressure, right? Because xi is not a function of pressure, so this derivative is 0. That means delta V is equal to 0, and which we know our definition of ideal solutions. For ideal solutions, delta V is 0. That's how we define the ideal solution. From this equation also we can get the same thing. Okay, any questions on doubts on this delta G and delta V for ideal solutions? Okay, if there are no questions, we'll proceed further. We have the equation for enthalpy change delta H by RT equal to minus summation xi double ln AI by double ln T at constant pressure and X. And if we take substitute AI equal to xi double ln xi by double T at constant pressure temperature is equal to 0, because again composition is not a function of temperature. It does not depend on temperature, doesn't depend on pressure. So this term is 0. Therefore delta H is equal to 0 for ideal solutions. Okay, any questions? Okay, if there are no questions, then let's go to entropy. We have derived equation for entropy change delta S by R is minus summation xi double ln AI by double ln T at constant pressure and composition minus summation xi ln AI. So this is AI equal to xi. What you'll get is delta S by R. First term will become double ln xi by double ln T at constant pressure composition. Now this is equal to 0 because xi is not a function of temperature, so first term becomes 0. Okay, so this term becomes 0. This term becomes 0 like the previous term.
Okay. So what we'll get is W by R is equal to minus summation xi ln xi. So if you know the composition, we can find out entropy change for ideal solutions. Just like we saw that, we can find out Gibbs free energy change for ideal solutions. Any questions? Okay, so let's see an application of this ideal solution equations. Okay, let's see if I can share this thing. Can you see this PDF? Yes, sir. Okay, so example 7.19 is a solved example in Narayanan. A vessel is divided into two compartments. One contains 100 moles nitrogen at 298 Kelvin and 1 bar, and the other contains 100 moles oxygen at the same conditions. That means 1 bar and 298 Kelvin. The barrier separating them is removed, and the gases are allowed to reach equilibrium under adiabatic conditions. What do you mean by adiabatic conditions? What is adiabatic conditions? नहीं पता क्या? सर वो डेल्टा H इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. Right. So there is no heat addition or heat removal. Right. So essentially, it is a what you call isolated system. So what is the change in entropy of the contents of the vessel? So we have one vessel with a divider, and what we are doing is we are essentially mixing the two gases now, nitrogen and oxygen, by removing the barrier between the two. So what we need to find out what is the change in entropy. So we are treating gases as ideal. The temperature and pressure before and after mixing will be the same, right? Temperature is 298 bar on both the sides. So after mixing also it will be same because it is ideal gases. So for 1 mole of mixture, the change in entropy on its formation of pure components is given by equation this, right? Delta S is equal to minus R summation, this summation xi and xi. अभी देखा हमने ideal solution के लिए क्या होता है, right? So now when we mix nitrogen and oxygen 1 mole each, तो mole fraction क्या हो जाएगा after mixing? 100 moles, sorry, 100 moles नाइट्रोजन है, 100 moles ऑक्सीजन है, दोनों को मिक्स किया तो मिक्सिंग के बाद मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का? 0.5 because we are mixing 100 200 हो जाएगा total moles. So nitrogen will be 100 upon 200 and oxygen will be again 100 upon 200. So it is 0.5. So delta S हमने देखा था is equal to minus R summation xi and xi, and xi we know it is 0.5. If substitute in this one, what you get is minus R
into ln 0.5. Let me see. Scan बराबर नहीं हुआ. Let me check. Okay, because it is summation, right? So summation xi means x1 ln x1 plus x2 ln x2 आएगा. समझा क्या? It will be. Let me see. Sir. So what we have is delta is equal to minus r summation xi ln xi. So that is equal to minus r into x1 ln x1 plus x2 ln x2. ठीक है? So this will be equal to minus r into, because xi and x1 and x2 are both 0.5, so 2x1 ln x1. x1 is equal to x2 equal to 0.5, right? So if you substitute for this, what you'll get is ठीक है? So this is equal to nothing but minus r ln 0.5. ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. हाँ. Okay, so coming back to that PDF, so it is minus r ln 0.5 and 8.314 डाला है यहाँ पर, और ये डाला तो what you get is 5.763. सर वो ln2 कहाँ से आया? Yes, ln2 कहाँ से आया? Who can tell me? Who can tell me ln2 कहाँ से आया? सर माइनस साइन निकाल के उसका रेसिप्रोकल लिया. 0.5 minus ln 0.5 is nothing but ये माइनस साइन है ना, इसको प्लस करने के लिए r बाय ln ऑफ 0.5 आएगा ना. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, सॉरी. सर वो 5/10 है ना, तो 1/2 होके 2 ऊपर जाएगा. हाँ, राइट वही है. सो इट इज एसेंशियली r यह समझ आएगा, राइट? ln of 0.5 minus ln 0.5 ln of 1 by 0.5. So it is ln of 2. बराबर. समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर. सर स्क्रीन नहीं दिख रही है. स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? ओके, दिख रहा है अभी? यस सर. Minus r ln 0.5 is nothing but plus r ln 1 by 0.5. ओके
40 sir, 40. So it is RLN 2. So what we'll get is 5.763. Again, joules per mole Kelvin. Units of R are joules per mole Kelvin. ये यूनिट्स लेना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्रोपी चेंज का यूनिट्स जूल्स पर मोल केल्विन होता है. ठीक है सर वो ln1 डिवाइडेड बाय 0.52 नहीं आता है. ln ऑफ 1/2 क्या 1/0.5 क्या हो जाएगा? ln ऑफ 2 होगा ना. हाँ सर बराबर समझा. 1/2 1/0.5 इज 2 ना. ठीक है. एनी क्वेश्चंस डाउट्स ऑन दिस वन? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो लेट अस प्रोसीड फर्दर. ओके, सो विल नाउ सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. डेरिवेशंस बहुत किए हमने. And we'll start with 6.22. I think we have done. I'll show you again. Solve problems बहुत है यहाँ पर. You can check all those things. I'm not going to go through all of them. Difficulty होगा तो आप पूछ सकते हो मेरे से. There are many solved examples in this book, and बहुत बार solved example ही आते हैं. So I'll not spend too much time on solved examples. We'll see unsolved examples, some of them. 6.22. ये प्रॉब्लम है. एंड वी हैड सॉल्व दिस. फिगसिटी इक्वल 10.151. ये पहले ही किया था हमने, सॉल्व देखा था, राइट. उसके बाद 6.24. 6.24 लेट्स सी क्या है. Okay, 6.24. Can you see this example? Yes sir. Find the fugacity coefficient at 1 bar, 5 bar and 10 bar for a gas that follows the equation of state PV equal to RT into 1 minus 0.00513 P, where P is pressure in bar. So if we take the equation जो हमने देखा था पहले, RT is equal to DLNF, RT DLNF is equal to VDP, right? So now you put for V here, substitute for V is RT by P into bracket 1 minus 0.00513 P. तो P अंदर लिया, you get RT 1 upon P minus 0.00513 and dP, right? So it is RT 1 upon P is 1 upon P dP is DLN P minus 0.00513 dP, right? So what you get is DLN F by P है. ये DLN P यहाँ से इधर लाया हमने, राइट हैंड साइड से इधर, तो इट विल बिकम DLN F by P. RT कैंसिल होगा दोनों साइड से. So what you'll get is minus 0.00513 dP, and this is nothing but fugacity coefficient ln5 is equal to minus 0.00513. You have to integrate dP from 0 to P. Always 0 to P रहता है यहाँ पर, right? So 0 to P किया तो minus 0.00513 into P आ जाएगा, and we can substitute for P 1 bar, 5 bar, 10 bar to get the value of fugacity coefficient, which is 0.995, 0.975 and 0.95 at different pressures. और इसमें से अगर आपको fugacity निकालना है तो into pressure किया तो what you get is fugacity at each pressure. ठीक है. Any questions on 6.24? Yes sir. सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम आता है
एग्जाम में इन सब में भी आया है. आई वांटेड टू शो यू दैट. लेट मी सी. Okay, let me show you that. So if you see this, can you see this in SEM 2018? दिख रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. So if you see this part B, first A part is derive and explain Lewis Randall rule. B part is compressibility factor is given by Z is equal to 1 minus 0.46 10 to the power minus 2p for a gas where P is in atmosphere. Calculate its fugacity at 10 atmospheres. Exactly उसके समान है जो हमने प्रॉब्लम देखा अभी. इसमें सिर्फ इंस्टेड ऑफ पीवी इक्वल टू आर टी के हिसाब से जेड दिया. जेड इज नथिंग बट पीवी बाय आर टी. तो वैसे ही करने का ये प्रॉब्लम. एंड वी कैन गेट द फिगासिटी. फिगासिटी कोफिशिएंट मिलेगा, देन फिगासिटी मिलेगा. यू कैन ट्राई दिस एट होम. इट वेरी सिंपल प्रॉब्लम सिमिलर टू एग्जाम्पल 6.24 नारायण. ये इंसेम 2018 में आया था. This for 6 marks. Very simple question. ठीक है. I'll not solve this thing. You solve it at home. It's very simple. Exactly similar to 6.24. Okay. And let's see 6.28. Okay. Can you see this? Example 6.28. दिख रहा है क्या? Yes. हाँ, sir. So if you see this, the density of gaseous ammonia at 473 Kelvin and 50 bar is 24.4 kg per cubic meter. Estimate its fugacity. Okay. तो molar volume of ammonia, because density दिया है, we can find out molar volume, molecular weight divided by density in kg per cubic meter, right? और 1000 क्यों लिया है? Any idea? Sir, वो 17 को मोल से 70 तो molecular weight है ना? Molecular weight by density molar only. Molecular weight by density. Molecular weight का units नहीं रहता है, right? और it is kg per kilomole, right? If it is kg per kilomole और नीचे हम kg per cubic meter ले रहे हैं, तो we should get cubic meters per kilomole. सर 1000 नहीं आना चाहिए. 1000 नहीं आना, गलत है. गलत है. 1000 नहीं आना चाहिए. तो नीचे कन्वर्जन फैक्टर अलग डाला है उसने. What he has done is he has taken pressure in newtons per meter square, that is Pascal, right? इसको 50 बार को into 10 to the power 5 into है ये,
10 to the power of 5, yeah. So it is 50 into 10 to the power of 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज पास्कल में लिया है इसने. सो इफ यू टेक एफ, एफ का इक्वेशन क्या था? वॉल्यूम, सॉरी, हाँ, v इंटू पी स्क्वायर बाय आर टी, राइट? यही क्वेश्चन था 6.142. सो v की जगह पे इसने 17/24.3 लिया है. प्रेशर 50 इंटू 10 पावर ऑफ 5 पास्कल में लिया स्क्वायर. 8.314 आर लिया है. 8.314 का यूनिट्स क्या होता है आर का? व्हाट इज यूनिट्स ऑफ आर? पास्कल मीटर क्यूब पर किलोमोल. पास्कल में लिया है तो उनको वो 24.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए. राइट, सो दैट इज व्हाट इट इज एक्चुअली. ये जो यूनिट्स वाला है ना, क्यूबिक मीटर्स पर किलोमोल, यहाँ पर नहीं चाहिए, राइट? ये वॉल्यूम में यहाँ पर नहीं चाहिए 1000, बिकॉज 17/24.3 इज करेक्ट. क्यूबिक मीटर्स पर किलोमोल, यहाँ 1000 नहीं चाहिए. बट ये आर का यूनिट्स है, व्हाट यू कॉल, किलो पास्कल क्यूबिक मीटर पर किलोमोल केल्विन, राइट? आर का यूनिट्स क्या होता है? पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन. लेट मी शो यू दैट. आर क्या रहता है? किलो पास्कल क्यूबिक मीटर पर किलो मोल केल्विन, राइट? और वी कैन से पास्कल क्यूबिक मीटर पर मोल केल्विन, राइट? ठीक है. प्रेशर लिया है इन्होंने, पास्कल में बराबर लिया है. ये दिख रहा है क्या? कैन यू सी दिस? व्हाट आई हैव रिटन? प्रेशर इज इन पास्कल, डेंसिटी इज इन मोल्स पर क्यूबिक मीटर, और केल्विन में टेम्परेचर चाहिए. मोल्स है, इसके लिए कन्वर्ट करने के लिए उसने 1000 से मल्टीप्लाई किया. फिर वहाँ पर 1000 मोल्स इज 1 किलो मोल ना, तो हमारे किलो मोल में डेंसिटी कैलकुलेट किया उसने. और वी कैन से ही हैज टेकन डेंसिटी इन क्यूबिक मीटर्स पर मोल, वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स पर मोल. तो जो वॉल्यूम लिया था ना, V was 17/24.3 and into 1000. This is cubic meters per mole, not per kilomole. जो बुक में है ना, किलोमोल नहीं रहना चाहिए, it should be moles. Then it is correctly matching. Pressure in Pascal, volume in cubic meters per mole, and temperature in Kelvin. समझ में आया? हाँ सर. Okay, so that is what it should. वो यूनिट्स में गड़बड़ किया थोड़ा. यूनिट्स शुड कम एज cubic meters per mole, not kilomole. Then it is correct. कैसे भी करो वो 1000 आएगा यहाँ पर, whether we do it in volume or whether we do it in R. So this is what is fugacity. ठीक है. So next problem we'll see is 7.3. ये हमने किया ऑलरेडी, राइट? मिथेनॉल वाटर मिक्सचर का. This you already done in the class, reviewed in the class, right? 1.05, 1.017 फर्स्ट यूनिट में किया था. Okay, let's not worry about that. 7.3, 7.5.
ओके, सो 7.5 इज एट 300 केल्विन, दिख रहा है ये? हाँ सर। The volumetric data of a liquid mix for liquid mixture of benzene and cyclohexane is represented by V is equal to, आप लोग घर पे हो तो बुक लेके बैठते हो कि नहीं? बिकॉज ये क्या है, इसमें कुछ 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 मिस्टेक्स है जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ मैं. ओके, it is 1049.4 into 10 to the power minus 6 minus 16.8 10 to the power minus 6x minus 2.64 10 to the power minus 6x square. इक्वेशन दिया है v के लिए as a function of mole fraction. The x is the mole fraction of benzene and v has units of cubic meters per mole. Find expressions for partial molar volumes of benzene and cyclohexane. ठीक है, so we take this equation और ये derive किया था हमने equation v1 bar is equal to v minus x2 double v by double x2, right? So if you put x2 is equal to 1 minus x1 and dx2 is equal to minus dx1, we will get v1 bar is equal to v plus 1 minus x1 double v by double x1. ठीक है, इक्वेशन 7.25 हमने derive किया था पहले. So now what we do is we have to find this derivative. So double v by double x1 from this equation, if you derive, we get this equation in terms of x1. Simple differential, right? And substitute into 7.25, you get this equation for v1 bar. So this is the derivation for v1 bar का equation आ जाएगा, right? और v2 bar का equation हमने derive किया था, v2 bar is equal to v minus x1 double v by double x1. Again, we substitute for double v by double x1 in this equation and you get v2 bar. सिंपल डिफरेंशिएशन है, इक्वेशन में डालने का. ऐसा कभी कभी आता है एग्जाम में एंड दे विल गिव डिफरेंट इक्वेशन फॉर v. It will not be exactly the same, but it's just substitution of derivative. ठीक है, any doubts on this one? चलिए, सर x1 मोल फ्रैक्शन है क्या? मोल फ्रैक्शन है ना, x1 is मोल फ्रैक्शन दिया है ना, प्रॉब्लम में दिया है. x1 is मोल फ्रैक्शन ऑफ, where x is the mole fraction of benzene. x1 बेंजीन लिया तो x2 साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, बस बाइनरी सिस्टम है ना. तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, वही डाला ना हमने यहाँ पर, x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 एंड dx2 इज इक्वल टू माइनस dx1, तो ये प्लस हो गया और यहाँ पर dx1 हो गया. तो जैसे कि x1 एज बेंजीन और उसको डिफरेंशिएशन किया x1 की तरफ विद रिस्पेक्ट टू x1. सर वो x1 कैलकुलेट कैसे किया प्लीज बता दो. x1 कैलकुलेट नहीं किया, इक्वेशन डेराइव किया सिर्फ. x1 कहाँ कैलकुलेट किया? व्हाट डू यू मीन बाय x1 कैसे कैलकुलेट किया? क्वेश्चन समझा नहीं मेरे को फिर आपका. क्या क्वेश्चन था? देवेंद्र था ना, कौन था? हाँ सर, वो 1 माइनस x1 के बाद वो कैसे आया? ये वाला 7.25. हाँ, उसके बाद की स्टेप. You have to find this derivative double v by double x1, right? ये इक्वेशन है v का. Now if you take derivative with respect to x1, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा. ये x1 का dv by dx1 किया तो ये 1 हो जाएगा, इसको किया तो 2x1 हो जाएगा. ये करना है ना हमारे इक्वेशन 7.23 का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x1. तो dv by dx1 क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 इज 0, इसका 1 हो जाएगा, x1 का, इसका 2x1 हो जाएगा. वही डाला ना इसने यहाँ पर. हाँ सर, अभी समझे. सिंपल डेरिवेटिव निकालने का ये डबल डाला है कि एक्चुअली यू डोंट नीड partial derivative, it's actually total derivative because there is only one variable.
तो इट शुड बी dv by dx1 नाउ. ज़्यादा कंपोनेंट रहा तो पार्शियल लेना पड़ेगा. यहाँ पर ओनली 2 कंपोनेंट्स, राइट, एंड वेरिएबल इज ओनली 1 x1. एक्चुअली पार्शियल टोटल डेरिवेटिव है ये. तो यहाँ पर लिया तो डाला, इसमें v1 बार मिल गया हमारे को. सिमिलरली v2 बार. ठीक है. Yes, sir. So you may get some other equation but similar. Procedure is similar. Equation may change but कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट करने का. Okay. So then next one is 7.10. Okay, 7.10. Let me show. You should actually go and solve these problems because क्या है, बुक में पूरा स्टेप्स नहीं दिया रहता है. So if you solve it at home, you'll get better clarity. इसके सॉल्व एग्जांपल्स में से काफ़ी बार आ जाता है एग्जाम में. So if you do that, you'll get good chances of getting that correct answer. 7.10. Okay, 7.10. Okay, can you see this? 7.10. Yes, sir. The Henry's law constant for oxygen in water at 298 Kelvin is 4.4 into 10 raised to the power of 4 bar. ये into है. Estimate the solubility of oxygen in water at 298 Kelvin for a partial pressure of oxygen of 0.25 bar. So we have to find out solubility in water if Henry's law constant is given. We have seen that oxygen ka solubility in water is very low. That's what we'll see now, right? Now this equation ये है Henry's law constant, Henry's law का equation. Equation 7.72 gives solubility of gas in liquid in terms of mole fraction. So the substitute value of Ki is equal to 4.4 into 10 to the power of 4 bar and Pi bar, ये partial pressure जो है 0.25 bar, we'll get Xi equal to 0.0568. Simple substitution है ये. Just to demonstrate how Henry's law constant, Henry's law equation can be used. ये इधर substitute किया Ki का value, Pi bar का value use किया, you get Xi equal to 0.0568 into 10 to the power of minus 4. Because the 10 to the power of 5 denominator में गया, 4 denominator में गया, it will become 10 to the power of minus 4. So what we can do is, how do we understand this? X of O2 is moles of oxygen, that will be moles of oxygen plus moles of water, right? Mole fraction of oxygen in water क्या हो जाएगा? Moles of oxygen divided by total moles. Right? Total moles is moles of oxygen plus moles of water. But we know that moles of oxygen is very low. Solubility is very low because it is 10 to the power of minus 4 आया X में. Right? 0.0568 into 10 to the power of minus 4 is mole fraction of oxygen in water. So we can ignore this thing, moles of oxygen, and approximate as moles of oxygen per mole of water. Because denominator में इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. So what is therefore what is it? Solubility of oxygen is 0.0568 10 to the power of more 10 to the power minus 4 moles of oxygen per mole of water. Right? इतना कम solubility है ऑक्सीजन का वाटर में. समझ में आया ये? Any doubts, questions on how we got moles of oxygen per mole of water? Okay, नहीं है तो then you can convert this into kgs also, अगर kg में चाहिए तो, right? तो what you do is multiply by molecular weight of oxygen, तो moles का ग्राम्स हो जाएगा या kg हो जाएगा, और इसको moles of water को 18 से मल्टीप्लाई किया तो you get grams per gram और kg per kg, right? So into 32 किया ऊपर में और नीचे में into 18 किया और डिवाइड बाई 18 किया, तो what you get is 0.101 into 10 to the power of minus 4 kg of oxygen per kg of water or grams of water per gram of water.
So the solubility is so low. सर वो हमने उधर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों अज्यूम किया? Because solubility of oxygen we know is very low in water. By our own experimental data it shows, just we are just showing कि Henry's law constant से हम solubility कैसे calculate कर सकते हैं for very dilute solutions. मैंने एग्जांपल यही दिया था आपको कि ऑक्सीजन का, SO2 का, नाइट्रोजन का solubility in water या कहीं भी solvent में निकालने के लिए we can use Henry's law because solubility is normally very low for gas and liquids. ठीक है? Do not use methanol in water, ethanol water because उनका solubility कम नहीं रहता है, काफ़ी रहता है. That's why we use gases. You can use this for gases and liquids. ठीक है, समझ में आया? Yes, no, don't know. हाँ सर. Okay, so next example we are going to look at 7.11. ये हमने कल देखा था कि कल? I think we saw this yesterday. Partial pressure of acetone and chloroform. ठीक है, देखते हैं फिर से. The partial pressure of acetone and chloroform were measured at 298 Kelvin and are reported below. Right? This is PA bar, this PB bar. I think we have done this before. किया क्या? हाँ सर, किया था. ये किया था ना? We have done this before. हाँ, ये किया था हमने कल. Okay. So next problem we'll see is 7.12. Okay. So same problem है ये. Partial pressure acetone and chloroform are measured at so and so. ये pressure partial pressure PA bar है, PV bar है. Now what we need to do is calculate activity and activity coefficient of chloroform in acetone. That is B. Chloroform is B in acetone at 298 Kelvin based on Lewis Randall rule and Henry's law. Right? Henry's law constant हमने कल निकाला था, right? Kb equal to 0.217 bar chloroform के लिए. The vapor pressure of chloroform PB bar हमने निकाला था, right? We had seen pure solvent के लिए. When you take pure ये right? ये PB है, PB है, ये PA है. So when it is XA equal to 0, XB equal to 1. So this is the vapor pressure of chloroform. And similarly, when XA equal to 1, this 0.457 is the vapor pressure of acetone. ये हमने देखा था कल. Activity was defined by equation 7.73. So what we had seen is equation 7.73 में, ठीक है, ये equation यही दिया है इसमें. This is gamma actually. AI is equal to gamma xi है. Right? And based on Lewis Randall rule, AI is nothing but pi bar by pis. ये भी देखा था हमने. Right? And based on Henry's law, activity is pi bar by ki. xi किया था हमने इसको, अभी कैलकुलेट किया था xi. So this is what activity is for Lewis Randall rule, and this is what activity is for Henry's law constant. ठीक है? And if we activity coefficient based on Lewis Randall rule is gamma I fi bar by fi 0 xi, nothing but ai by xi. ये भी देखा था हमने. And activity coefficient based on Henry's law constant is again same thing similar to this one. fi 0 को ki करते हैं हम, and we get ai bar ai prime by xi. Equations are similar.
Now the above equations are used to calculate activity and activity questions for different concentrations. A sample calculation is provided for the second set here. Right? X equal to 0.2 लिया इसने ये वाला. PA bar is 0.049 and PB in bar is 0.288. Okay. So इसने PA bar is 0.049, PB bar is 0.288, KB हमने कैलकुलेट किया था कल, and PBS vapor pressure is 0.286 for chloroform. Right? So if you take Lewis-Randall rule, this is nothing but A activity was PB bar by PBS. PB bar is 0.288, PBS is 0.386, and you get 0.75. And activity coefficient is activity upon XB, so 0.75 by XB. XA is 0.2, so XB is 0.8. So we get 0.94 as gamma B. समझ में आया ये? सिंपल है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है इक्वेशन में. Similarly, we can do for Henry's law. AB prime is equal to PB bar by KB. AB PB bar को दिया है यहाँ पर 0.288. वो जो हमने जब एक्टिविटी निकाला तब हमने XB का 0.2 लिया था ना. नहीं, पॉइंट एक्स से 0.2 था. ये सेकंड पॉइंट एक्स से 0.2. ये सेकंड पॉइंट लिया ना. एक्स इक्वल टू 0.2, पी ए बार इज इक्वल टू 0.049, पी बी बार इज 0.288. राइट, वही लिखा है यहाँ पर. एक्स इक्वल टू 0.2, एक्स पी इक्वल टू 0.8, पी ए बार 0.049, पी बी बार 0.288, के बी हमने पहले कैलकुलेट किया था, एंड पी बी एस इज जबरदस्त, ये भी पहले देखा था हमने. तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर. पी बी बार का वैल्यू डाला है, पी बी एस का वैल्यू डाला है, गेट एक्टिविटी, एंड डिवाइड बाय एक्स बी से डिवाइड करना है हमारे को यहाँ पर. एक्स बी इज 0.8 बिकॉज यू फाइंडिंग इट फॉर क्लोरोफॉर्म. एक्स बी इज 0.8, तो एक्टिविटी कोफिशिएंट 0.94 आया. ठीक है. Is it okay? Yes, sir. Okay, so if you take Henry's law, similarly, AB prime is equal to PB bar upon KB. Instead of PBS, it's KB. Again, same thing. KB यहाँ डाला 0.217, you get AB bar, AB prime, sorry. And gamma B prime is equal to AB prime upon XB. You get 1.66. ठीक है. So you can do this calculation for all the values. ये सैंपल दिया है इसने एक पॉइंट के लिए, बट जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पर उसके लिए हम कर सकते हैं. सर लेकिन जो हेनरीज लॉ है वो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशंस के लिए होता है ना, तो एक्स भी हमने 0.8 लिया है. या इसने सिर्फ बोल रहा है कि अप्लाई करके देखो. इट डजंट से कि इट्स गोइंग टू बी करेक्ट. इट जस्ट शोइंग कि कैसे कैलकुलेशन करने का. एक्चुअल वैल्यू में भी डिफरेंट. या आई एग्री विथ यू. इट शुड बी एक्चुअली डन फॉर वेरी लो वैल्यूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. जो यहाँ पर है, इट शुड बी क्लोज टू जीरो जो है वो लेना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए. वहाँ पर वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो उसने ये वैल्यू लेके कैंसिल किया. सैंपल दिखा रहा है कैसे करने का. बट इफ यू हैड वैल्यू सपोज एट 1% कॉन्सेंट्रेशन, यू कुड हैव डन दैट. और हियर 0.99 रहता तो एक्स से 0.99, तो एक्स भी 0.01 हो जाता. बट वैल्यू दिया नहीं है, इसलिए नहीं किया. ऐसे सैंपल के लिए किया इसने, जस्ट शोइंग कि कैसे अप्लाई करने का. डजंट मीन कि इट इज गोइंग टू गिव करेक्ट वैल्यूज. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है. So we'll continue from here tomorrow.
solve some more problems, which unsolved problem भी एक दो देखेंगे, and complete unit 2 tomorrow hopefully. Then we'll have a test on unit 2. कब रखने का टेस्ट unit 2 का? When do you want to test? मंडे सर। मंडे को हो जाएगा तैयारी? नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे मेरे को ये मंडे की बात कर रहे हो तुम। ओके ठीक है, नेक्स्ट मंडे इज ओके, फाइन विथ मी। दैट मीन्स व्हाट इज द डेट? 24th of August, is it? यस सर। Okay, so 24th August को टेस्ट रखेंगे, बट आई विल नॉट टेक टेस्ट ड्यूरिंग योर लेक्चर पीरियड, बिकॉज हम बहुत पीछे चल रहे हैं। अब यूनिट 2 अभी कंप्लीट हो रहा है हमारा, यूनिट 3 होना चाहिए था, बिकॉज वी डिड लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क, बेसिक वर्क फॉर मंडे का 45 के बाद टेस्ट लेक्चर होने के बाद चलेगा? यस सर। बिकॉज क्या हमको मेकअप करने का, यूनिट 3 अभी बाकी है पूरा, यूनिट 3 तक होना चाहिए था हमारा, बट ठीक है, इट्स नो प्रॉब्लम। सो विल टेक द टेस्ट एट 3:45 ऑन 24th of August. Okay. ठीक है, so I'll stop the recording.